So example 8. A deep tank bulkhead is 12 meters broad. So width of the bulkhead is given to you. Notice वहां पे height दी हुई थी, यहाँ पे width दी हुई है. Is 12 meters broad. At the top, the vertical ordinates at equidistant transverse intervals are as follows: 0, 3, 5, 6, 5, 3, 0 meters respectively. Find Kp and thrust. So we have to find Kp and the thrust when it is filled up to a head of 2 meters. To a head of 2 meters. So let's draw a diagram first. So this is a bulkhead again, and the bulkhead has again similar, so same story. A bulkhead will have a top. A bulkhead will have a certain height. And a bulkhead will have a certain bottom. This is the top. This is tank top. This is the keel. The width of the bulkhead is 12 meters. Okay. So port to starboard is 12 meters. And the vertical ordinates at equidistant transverse interval. These are the transverse intervals. This is vertical interval, transverse interval, athwart-shape interval are as follows. Vertical ordinates 0. So this is 0. Then is 3. So this is 3. Next is 5. This is 5. Next is 6. This is 6. Next is 5. This is 5. This is 3. Next is 3. And this is 0. So this becomes our bulkhead. This is a bulkhead. So the maximum height of the bulkhead is how much? 6 meters. That's the maximum height of the bulkhead. And this is filled up to a head of 2 meters. Head of 2 meters का क्या मतलब है? टैंक टॉप के ऊपर पानी, साउंडिंग पाइप में. ये वाटर लाइन है, ये 2 मीटर है. This is the head of 2 meters. That means I could have given you the question to a sounding of 8 meters. मतलब एक ही रहता. I can give you sounding of 8 meters or I can give you head of 2 meters. The meaning is the same. Next, ये कहता है कि तो लेट अस, जो हमारा नॉमेनक्लेचर है, ये रहा हमारा जीसी. डिस्टेंस ऑफ जीसी टू द वाटर लाइन, पहले डिस्टेंस ऑफ जीसी टू द टैंक टॉप D1 निकाल लो, पहले टैंक टॉप का तक का. डिस्टेंस ऑफ जीसी टू द वाटर लाइन इज D. So D is equal to D1 plus 2. GC के कहीं नीचे हमारा P आएगा. P to the water line is known as Z. And therefore this is our KP. अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया. Now our diagram is complete.
Any doubts in the diagram? All okay? All okay, sir. Okay. Let us make a table. Let's make a table. Title of the first column. क्या बनेगा? What's the title of the first column? Ordinate. Coordinates. Coordinates from top. Coordinates are measured from top. Same order as the question. 0, 3, 5, 6, 5, 3, 0. Title of the second column. Simpson multiplier. Which rule would you like to use? Rule 1. 1. So put the multipliers. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Title of the third column. Area function. मल्टीप्लाई कर दो इनको और फिर ऐड कर दो and tell me the value of SOP1. Tell me the value of SOP1. $68. 68, sir. सबका 68 आ रहा है? Okay. 68. Yes, sir. All right. It is measured from top. So if I put my hand on top and I check the orientation of the ordinates with respect to my hand, how do I find them? Perpendicular. Perpendicular. So that means this question I have to do using vertical ordinates because they are perpendicular. So vertical ordinates. लीवर क्या होता है उसमें? Lever about and top. Lever are the ordinates itself. That means column number 1 will become the lever now. 0, 3, 5, 6, 5, 3, 0. This is the lever itself. Lever about the TT. So my moments are being taken about TT because the lever is about TT. So remember, horizontal ordinates, lever is the water line. Vertical ordinates, lever is the TT. Please remember that. So next column. First moment of area function about TT, about the TT. Multiply them and tell me the value of SOP2. So 316. सबका सेम आ रहा है?
Sir, you just saying horizontal ordinates में lever is from waterline and vertical में the lever is the ordinate only, correct? I'll repeat once again. Horizontal ordinates में I take the lever from waterline. Vertical ordinates में I take the lever about tank top. Okay, sir. Now I apply the same lever once again. So column number 1 is equal to column number 4 is equal to column number 6. One more lever about TT. फिर से replicate कर दिया. और फर्स्ट मोमेंट को लीवर से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल आई गेट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाट? टीटी. आईटीटी फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया एंड टोटल इट अप एंड दैट विल गिव यू SOP 3. 1580. 1580. 80. सबका सेम आ रहा है? Is everybody getting the same answer? Yes, sir. Okay. Now, एरिया. अच्छा, H निकालना है मुझे पहले तो. H is equal to width divided by n minus 1. Width is 12 divided by 7 minus 1. 12 divided by 6. 2. So H is 2. So area is equal to H by 3 into SOP 1. So tell me the value. So 45.33. 45.33 meter square. All right. Now, vertical ordinates. First moment of area will be multiplied by half. Half is a constant. हमेशा. So half into H by 3 into SOP2. ये हमेशा होगा half. Half is a constant value for vertical ordinates for first moment of area. Sir, can you just repeat, sir? वो थोड़ा internet problem है. First moment of area, half is a constant in vertical ordinates. So first moment of area is half into H by 3 into SOP2. ये half constant है, हमेशा रहेगा. Okay, sir. Okay, thank you. In vertical ordinates, not in horizontal ordinates. Vertical में into 2 by 3 into 316. So 105.33. 105.33 m cube. Similarly, moment of inertia about tank top. इसका कांस्टेंट वैल्यू 1/3 है. इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा. 1/3 into H by 3 into SOP3 in vertical ordinates only. 1/3 into 2/3
into SOP3 1580. Three 351.11. 315.11. So M. 351.11. अच्छा 351. Okay. 351.11 m to the power 4. Okay. Now मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंक टॉप है. ठीक है. ठीक. मेरे को अभी D1 चाहिए. D1. So D1 is equal to total first moment of area about tank top divided by total area. ये मुझे D1 देगा. So total first moment of area 105.33 divided by total area 45.33. 105.33 divided by 45.33. D1 कितना आता है? 2.32. 2.32. Go to 3 decimal places. 2.323. 2.324 आ रहा है. So to go to 3 decimal places, please remember. जिसको भी ये आपका 105.33 ये मतलब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये भी लंबा चल रहा है. सो 3 डेसिमल तक जाओगे आप पूरा एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. Alright. तो प्लीज रिमेंबर दैट. ये आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो जाएगी अब. सो योर D is equal to D1 plus 2 is equal to 4.324 meters. So your D is 4.324. Now मेरे पास ITT है. मेरे को IWS चाहिए, IWL चाहिए. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है IGC से अगर WL तक जाना है मुझे तो प्लस AD स्क्वायर कर दूं मैं. बट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मुझे TT से WL डायरेक्टली नहीं लेके जाएगा. I'll have to first come down to GC and then take it up to WL. That is what theorem of parallel axis is all about. So therefore, just see what I'm doing. ITT is equal to IGC plus AD1 square. Correct? So IGC is equal to ITT minus AD1 square. Are you with me? Yes, sir. But I know IWL is equal to IGC plus AD square. Is this okay with everyone?
Yes, sir. So substituting this over here, I get IWL is equal to ITT minus AD1 square plus AD square. Are you okay with this formula? Yes, sir. So now you put the values, you have everything with you. ITT is 351.11 minus A 45.33 into D1 2.324 square plus 45.33 into D square 4.324 square. Do this very carefully and this will give you IWL. इसको carefully करना, यहाँ पे बहुत error mistakes बहुत होती हैं. Sir, 953.859. 953.859. आपका सेम आ रहा है. Is everybody getting the same answer? Yes, sir. Okay. So अब मेरा IWL आ गया तो मैं अब मेरा फॉर्मूला में चला जाता हूँ. Z is equal to IWL upon AD. IWL is equal to 953.859 upon A. A is 45.33 into D 4.324. So Z is equal to how much? 4.86. 4.866 going up to 3 decimals will give you Z. And therefore now you find out Kp. Sounding will be 8 minus Z. So Kp is equal to how much? $3.134. 3.134. And similarly, find out thrust is depth into density into area. Depth 4.324 into density 1.025 into area, which is 45.33. So thrust will be equal to how much? 200.90. 200.901. 0.901. Okay. So many tons. That is the thrust which is acting on this bulkhead.
सर ठीक है। ये जो D1 आपने निकाला सर इसमें, तो दिस इज दिस थ्रू वर्टिकल वी आर डूइंग लाइक दिस. इफ यू आर हॉरिजॉन्टल में जब आपने वो एग्जांपल 7 एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वी डिडंट हैव D1, वी हैड ओनली D. Correct, because I took the moments directly above the water line, so I directly got my D. ओके सर, ओके, अंडरस्टूड. बिकॉज़ द वाटर लाइन से पैरेलल होगा ना सर सारे ऑर्डिनेट्स, इसके लिए ये वैसा सारे है ना सर? ऑर्डिनेट्स मेरे पैरेलल थे, इसलिए हाँ, ओके सर. इसलिए तो Thank मैंने डायरेक्टली मोमेंट्स अबाउट वाटर लाइन ले लिया था. इसमें मैं मोमेंट्स अबाउट टीटी ले रहा हूँ और उसके बाद में मैं +2 ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बल्कहेड. दिस पोर्शन अबाउट टीटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बल्कहेड. उसमें खाली साउंडिंग पाइप जट आउट कर रहा है. तो आई बी रॉन्ग इफ आई टेक मोमेंट्स अबाउट WL, because that will also include this portion. That's why I don't take that. Yes sir, understood sir. Thank you. Okay, is that okay? सर जिस भी क्वेश्चन में वर्टिकल ऑर्डिनेट्स दिए होंगे उसको ऐसे ही करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक. जिस क्वेश्चन में वर्टिकल ऑर्डिनेट्स दिए होंगे उसको ऐसे ही करना पड़ेगा. अब इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन है. सपोजिंग आई गिव यू साउंडिंग ऑफ 6 meters, तो क्या फर्क हो जाएगा? फिर तो सर टैंक टॉप का ही आ जाएगा सेम. टैंक टॉप इज द वाटर लाइन. यस सर. तो देन डायरेक्टली जो मुझे ITT मिल रहा है वो IWL ही है. यस सर, D1 भी D होगा सर फिर तो. तो D1 इज इक्वल टू D. तो ये माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं है. ये सारा ये वाला स्किप हो गया पूरा पार्ट. फॉर ओके सर, जो सेकंड मोमेंट होगा वो डायरेक्टली IWL हो जाएगा. एब्सोल्युटली राइट. ओके सर. तो ये वैल्यू 351.111 इज माय IWL ओनली इन दैट क्वेश्चन. और से सपोज सर इफ द वाटर लेवल इज बिलो TT देन? नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है. ओके सर. तो अगर if it goes below this thing, then the ordinates need to be reduced by that much amount. That is changing the whole question. So that is not in your syllabus.